Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about Le Chatelier's principle. This principle applied on dynamic equilibrium. Do you know what is dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium is this type of reaction in which the reactants are converted into products and products are again converted into reactants. It means the forward and reverse reaction taking place at the same time. Whenever this dynamic equilibrium is disturbed, हम जब इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, कैसे डिस्टर्ब करेंगे? बाय चेंजिंग द कंडीशंस लाइक प्रेशर, by change in temperature, by change in concentration of reactant or any product. Then what will happen? The position of equilibrium will shift to nullify that change to re-establish the equilibrium. जब हम कंडीशंस चेंज करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में चेंज करने की वजह से हम इक्विलिब्रियम को दोबारा से इस्टेब्लिश कर लेंगे. ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली ले चैटलियर प्रिंसिपल में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को या किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम्स आर डिस्कस्ड इन द ले चैटलियर प्रिंसिपल. So there are three factors which affect the chemical equilibrium. One is the change in concentration of reactant and product, any reactant or any product, or change in the concentration of temperature of this chemical reaction, or change in the change in the pressure of that reaction. And the catalyst is a non-factor. It will not affect the chemical equilibrium, but we will discuss the effect of catalyst in the Le Chatelier principle. So first of all, we will discuss that what is the effect of change in concentration on the chemical equilibrium. When we change the concentration of reactant or product, what will happen in order to re-establish the equilibrium? This is the chemical equilibrium reaction in which the reactants are converted into products, products are again converted into reactants. This is the dynamic equilibrium which is established in this reaction. So when we change the concentration, जब हम concentration को change करेंगे reactants की या product की, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी ताकि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो दोबारा एस्टैब्लिश हो जाए. ठीक है, दोबारा से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बैलेंस्ड हो जाए. आपको पता है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है. लेकिन अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा इक्विलिब्रियम दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाए. सो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को 4 हेडिंग्स में अटेम्प्ट करते हैं. वन इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ये आप लोगों ने अलग अलग हेडिंग्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है और साथ एग्जाम्पल्स देनी है, लेकिन आपने इसको इस टेबल में समराइज कर देना है. इस टेबल से आपको पैराग्राफ का लिखना इजी हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो गए रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट कम हो गए हैं, तो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया. बैलेंस दोबारा से अटेन करने के लिए जो रिएक्टेंट्स ग्रेटर क्वांटिटी में है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए. सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड राइट. Equilibrium will shift toward this direction in order to convert the reactants into the product, and again the equilibrium is established. When we increase the concentration of product, what will happen? These products, extra products, yeah, excess amount of products are converted into reactants. It means the equilibrium shift towards the left direction. When we decrease the concentration of reactant, there is a decrease in concentration of reactant. The product converted into reactants in order to re-establish the equilibrium. It means the equilibrium shift towards left. And when there is a decrease in the concentration of product, then the reactants are converted into product in order to re-establish the equilibrium. So the equilibrium will shift towards the right. But in all these cases, when we increase the concentration of reactant or decrease the concentration of reactant or product, then there is no effect on Kc because the equilibrium constant Kc depends only on temperature. ठीक है, so it doesn't affected by the change in concentration, so the Kc is not affected in all these cases. So now the second factor which affect the chemical equilibrium is change in pressure. Now we will discuss that what is the
effect on this chemical equilibrium when we change the pressure on this system. ठीक है? So in order to know about this factor, first of all we have to know what is the relation between pressure and volume. When we increase the pressure, what will be the effect on volume? So there is an inverse relation between pressure and volume. When we increase the pressure, the volume reduces. But how we know? हमें कैसे पता चलेगा इस रिएक्शन में कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम लेस है, क्योंकि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है. ठीक है, तो हमारे पास इस केमिकल इक्विलिब्रियम में, इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है. बट हाउ वी नो, हमें कैसे पता चलेगा वॉल्यूम कौन सी डायरेक्शन में रिड्यूस हो रहा है? सो देयर इज अनदर रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स. सो जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स लेस हैं उस डायरेक्शन में वॉल्यूम भी लेस है. इट मीन्स इस डायरेक्शन में हमारे पास वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है और इस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी ग्रेटर है. सो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, in order to nullify that change, in order to reduce that change. तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा. ठीक है, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स लेस हैं, तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे ताकि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो रीइस्टैब्लिश हो जाए. ठीक है, तो प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इस साइड पे होता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर होते हैं. तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स लेस नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं. So when we increase the pressure, the equilibrium will shift in the direction in which there is decrease in volume. And how we know the decrease in volume? Where there is less number of moles. ठीक है, सो इसको हम समराइज करते हैं एक टेबल में. पहले आप ये समराइजेशन टेबल बना लेंगे और फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे. When we increase the pressure, then equilibrium is established by decreasing volume. So how we know the decreasing volume? When we increase the pressure by decreasing volume, the equilibrium will shift to the side which have less number of moles. क्योंकि decreasing volume उसी साइड पे होगा जहां number of moles less होंगे, क्योंकि volume और number of moles का direct relation है. ठीक है, so when we increase the pressure by decreasing the volume, equilibrium will shift to the side having less number of moles. It means the equilibrium will shift in this direction. For this reaction, when we increase the pressure, equilibrium will shift in this direction. Equilibrium will shift in the forward direction. ठीक है? So when we decrease the pressure, then there will be the increase in the volume in order to nullify that decrease in pressure. So when we decrease the pressure by increasing the volume, the equilibrium will shift to the side having high number of moles. क्योंकि इंक्रीजिंग वॉल्यूम उस साइड पे होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स भी हाई होंगे. सो व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. And when we increase the pressure, equilibrium will shift in the forward direction. And when we increase the pressure or when we decrease the pressure, there is no effect on Kc, because equilibrium constant Kc for this reaction depends only on temperature, not on any other factor. The third factor is change